Good afternoon. Today we are going to discuss Union Budget 23-24, and it is my privilege to discuss in front of you all. Good gathering, and just a feeling happy about sharing that this is my 26th year of budget analysis. For last 25 years I had been doing this exercise, and fortunately, starting from Lok Sabha, Raj Sabha TV, All India Radio, live on the same day, sitting in the studio and discussing to the various forums, including in the then Planning Commission and now Niti Aayog. But anyway, my way of doing it more related to economic perspective, because for a common people, for a common citizen, the moment you talk budget, it is only tax, which will not be the main content in this discussion. So what exactly it is? So let's start. Union Budget 23-24. Primarily, it is considered to be a populist in nature because of considered to be the last full budget before election. So these are the political perspective. But we have to look upon really it is working, really it is continuing in the same way, or it is in a different way. Like government has been continuously presenting the budget one after another, and not only this government, previous government also had made it. So how to do an analysis? For analysis, mere standalone analysis will not be good. You have to look entire perspective in the sense that in which environment budget is going to be presented. So whenever we talk about environment, I'll give you one insight. What is right now IMF is looking towards the GDP growth rate with respect to various economy, including India. And India is highlighted here. And you'll find out whether it is world average or the advanced economies, good number of segregated economies, including China. Here, India has got highest growth rate among all prominent economies. This is a very positive feeling, good information. Though it is downward revised for the next year, but that downward revision is also ultimately highest among the others. If we look what kind of a debt to GDP ratio is there, which is very, very important indicator of the internal strength, fundamental strength of an economy. How much debt country has got. And there also you'll find out, barring Mexico, which is 81, rest all other countries have got higher debt GDP ratio compared to India. So our country is really debt to GDP also it is going to be good. And this is the point I like to discuss from macroeconomic perspective. Anyway, this is the second semester syllabus for you. What debt is? Debt is borrowings. And government has got two borrowings. One is called public borrowing, another is called external borrowings. You will find out here three different borrowings are there: household borrowing, private borrowings, and government borrowings. But we are more concerned with the government borrowings when it is related to economy. And government borrowings are two types. One is called public borrowings, another is called external borrowings. Public borrowing is not a problem. One can say that borrowing itself is a problem, but it's not like that. Public borrowing is borrowing from the own country citizen, people like us who is lending to the government directly and indirectly. That is public borrowing. Why it is not a problem? Because if any point of time government feels that they are not able to service those debt, not able to return, government can easily charge extra tax. This is within the control of government.
They can charge extra tax. And when the charge extra tax will be there, then in that case, question will be there, money has been sucked from the market. But never mind, money has been sucked from the market through taxation and ultimately through debt repayment, it has been pumped back to the market. So it may be starting from pocket A going to pocket B, but ultimately within the economic money is available. So overall macroeconomic impact will not be there from the retirement or debt repayment. But the moment it is an external debt taken from outside, it becomes a challenge. Because you, for making payment to that debt, whether it is interest or principal amount or both, it becomes a big problem. And that problem is you have to take it from your public, your own citizen, and ultimately you have to return back, pay it outside. So there is going to be a hardship in your economy. We all know right now a good number of economy has been there and economy has failed in the past. Very basic concepts in the financial management is risk-free rate has failed in the past, especially after 2007-8, and a good number of countries were unable to service their debt, external debt. Greece was one of the biggest defaulter. So, keeping those things in mind, it is nothing but very comfortably we can pay back. We'll look upon those things. So, this is the scenario. So, somewhere positive part. In addition to this, two more important statement I'll try to mention, which is the IMF statement in the previous month. It has been there in the IMF meet, and a statement was that world is at the gate of recession. Most of the economy is right now facing hardship, and any point of time they are on the fence. It is a matter of slippage, and it may go to the recessionary environment. It's a challenge. But one good part was there that world is looking towards India because India is the only hope. This is the statement, quote unquote, given by the World Bank. And IMF says that India is the only bright spot. So one is saying one brighter spot, India is there. Another is you can, this is a matter of your own analysis. You can keep on looking. So many economists had kept on making various statements towards India, about India, for India. But ultimately now the multilateral agencies like IMF and World Bank has started confessing and outspoken that India is the hope. In that hope, how India is going to meet. Again, very interestingly, India is right now looking with a target mission mode. And what is that mission mode is? India 22 onward had made another, that is 23 onward, after 22, 23 and onward, ready to celebrate 2047. And that remaining 25 years of time is declared as a Amrit Kal. This is a very normal understanding. Amrit Kal is there. What is this mission mode is that we have to make sure that in 2047, when 100th year of independence is going to be celebrated, it should not be an emerging economy, it should be an advanced economy. And when we say advanced economy, it has got certain parameters, including the one of the biggest parameter is per capita income. So income level has to be generated. That's a very important point. In this environment, how budget is unfolding, we have to look upon. So vision for this Amrit Kal is there. I'll try to, this time was very limited, so I'm not going to touch upon what 22, 23 was, or 21, 22 was there, or 2021 was there. But certainly I'll try to make, invite you that you all must go through the past budget and look into the time series to understand the importance and is it really moving in the same direction or it is in other direction. Now, three important pillars has been taken in the vision. One, two, three. They are the basically main pillars, strength, and that is youth. That's the first thing. But youth is, or rather, I can say one point agenda that's a youth has to be there. Now, how youth will be effective? If youth is there, how it is going to contribute to make economy from emerging to advance? So, youth must have got the job. So, that is the second point growth and job.
That is again responsibility of the policymaker, government. And third important point, only job will not be able to help until unless the facility infrastructure and capacity building is going to take place. So capacity building, macroeconomic stability is essentially required. How you are going to make it, that's a very, very important. So these are the three important points are there. Okay, what they should do. Is there any target area? Because these three dimensions you have created, but for whom? So that for whom also it has been very clearly mentioned. And that clear part is, first one is it should be infrastructure and investment. That is the key. Interestingly, you will find out, I was just a while mentioning you that please go through with the past and especially the last 3 years. You'll find out when there was a real challenge, whole world was facing the pandemic problem, India was focusing more on infrastructure development. And classical infrastructure growth had taken place. Even Guinness records has been made during this period. That's a real good output of India. Sometimes it feels, should I talk to that extent or not? Because it says that when you keep on talking too much positive, something wrong will go with that. But I am very hopeful. Country is now in a very good steering positions and it is going to make very fine advancement. So first one is infrastructure and investment. Second one is inclusive development. Now, generally one numerical question or mathematical question used to be there in the school time, that a length of a train and length of bridge has been there, and bridge, speed of the train is also mentioned, and question used to be that how much time it will take the train to cross the bridge, and catch was there, until unless the last bogie of the train has crossed bridge is not considered cross. Clear? Exactly, this is economic development. Until unless last person in the economic parameter, somewhere it is sitting on the remotest place, if they don't get cared, actual development has not taken place. Inclusiveness has not appeared. Whether it is financial inclusion, social inclusion, and finally, whatever my objective with this program is also there called academic inclusion. Until unless it is there. In a true sense, Ram Raj has to be there. And what is the definition of Ram Raj? One citation I'll share with you with the Ram Raj is that Ram Raj says that that kind of a political system should be there where the king has to travel to the last person. That is what called Sabri Prakran. Ram, anyway, when he was traveling, so-called Vanvasi at that point of time, that moment, but he was actually king because in his name, on his crown, Bharat was holding it. So practically Ram was king. In his name it was there. And what Ram was making? The last, whatever we say, tribal, woman, woman empowerment and, gender parity, lot of even programs are right now running. But it has already been demonstrated very nicely into that what exactly Ram Raj is there. If public has to keep on knocking the door or public don't know how to reach to the king, then in that case it can't be a symptoms of Ram Raj. So it is really required. Now in the change scenario, how it can be transformed from it could be there, that at least not the government representative, but at least government policy and government scheme should reach to the last without any hassle. That should be what, at least in the modern era, we can call it Ram Raj. That's what it is required. And you'll find out that also one very uh, exercise has been there. PVTG is one new concept, and PVTG has been introduced this time in the budget, particularly vulnerable tribal group. Very important one. So the third thing you will find out is reaching the last mile. This is what I was trying to mention. Reaching the last mile, it has to be there. Next is youth power, which anyway in the vision it was mentioned clearly, followed by financial sector reforms, green growth. Now, one interesting part is there.
First time India is now focusing that how artificial intelligence, machine learning, and high-end blockchain concept could transform agriculture. This is actually even the developed economy is surprised to see that India is on this path where they are going to transform. We have already seen the transformation, and I am sure a good number of you must have got some known in the USA, which is normally why US is it is a symbolic advanced economy representation as on date. You ask them what kind of vaccination certificate they have got, and the kind of vaccination I am sure 100% vaccination must be here. And in that vaccination, have you been there standing in the queue to get your vaccination certificate receipt? In the queue, you have got it. It is digital. This is the transformation. Empowerment has been there. Are you facing any problem? You eating even just 20 rupees Golgappa and paying through the Paytm or scanning the QR code? This is what the financial sector reforms has been there. And now the next step is to agriculture reforms. Grand reforms are going to take place. You can go through this is one point. Lot of changes is how it is going to be there. Those more or less points are also ready. Though that is what green growth and then unleashing the potential wherever it is hidden potentials are there that has to be there. This is what called Saptarishi, 7 priorities, and that priorities is focused. Now agriculture, which I was mentioning, transformation is going to take place. What are the components? Setting up agriculture accelerator fund. Second, target funding. So what is targeted funding? It's basically a focused group funding. 20 trillion rupees, 20 lakh crore रुपए had been earmarked for this exercise. Setting up widely available storage capacity. So physical capacity building is also important. Making India global hub for millets. Somehow we had been derooted from the millets. Somehow it misconception got created. It was convinced that millets are coarse grain, not good, and they started using those millets and translating into certain energy diets and transferring it, taking it 30 rupees kg, returning back to 3000 rupees kg. That what the game was going on. Ultimately, India has been successful in convincing the global platform called United Nations to celebrate millet years, and 2023 is a millet year. Two great convincing result has been there. First convincing result has been there. Our pre-medicated exercise that is called yoga. Yoga, you know now it is a yoga international celebration is there. We have been in position to convince that every year you make it and declaring millet because millet is what India is enriched. It is not only solving the problem of food, it is going to get a great opportunity. And it is not only Kathni, Karni is also there. Wherever G20 meet is taking place, you know, it's a Bajra ki, uh, you know, khichdi or so many things. And you just keep on surfing, you will find out it is there. So work is on. So it is that is what it has got a place, millet. And A and B, horticulture clean plant. We know A and B, it's a Atmanirbhar Bharat. And how Atmanirbhar, self-reliant India, how it is going to be there. That is what entire focus is. And building digital public infrastructure. Entire thing is going to be digitized. And what will be that? Of course, a good number of voice. I am still waiting. Someone who will be removed from the middle sides, they will have a big problem afterward. They will say all these things are farce. But now they can't call it because of two things. Financial sector reforms related to payment system. Everyone is making very easy payment. Fund transfer. You don't require when fund transfer is there immediately sitting, attending the class without getting noticed. You can transfer your fund. So easy, so comfortable. That is what there. So even in agriculture, it is going to be there. Now, when we talk about more credit to agriculture sector, the slope of the graph will indicate
From 15 to 22, that's 8 years of the graph has been there. And look upon from 85 to it is 186. More than double of the amount is going to be there. It is lakh crore, trillions of rupees pumped to agriculture to transform it because 53% of the population is directly affected there. That is what we have to monitor. And look into the food grain to some extent. Yes, that is also getting. This is a million ton bar graph, which is representing continuously it is increasing. If we talk about some other amenities, facilities, and micro infrastructure in the form of facilities available to Indian citizen, you will look upon starting from any point you say whether it is cash transfer 2.2 lakh crore over the 11.4 crore farmers. It's a Kisan Samman Nidhi, 6,000 rupees per annum in 2,000 rupees three times, and that is transmitted. And it has been provisioned properly. That you will find out it is there. Followed by insurance cover, 44.6 crore. And using the crore person, India, it is very much possible. 44.6 crore, it is covered under insurance cover scheme of PMSBY. I'll give a very funny task to you. Look into how many countries are there which has got more than 44.6 crore population, and you will understand that how much big task it is. हम तो जो बनाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है. We are actually populous country, so whatever other will think, we can create always records, and carrying them is really a challenge, really good challenge. So it is there. 220 crore COVID vaccination, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 11.7 crore households toilets constructed under SBM. Now, one more question is, toilet, is it really a great part? Answer yes. It is a game changer. In a good number of rural India, girls were not able to continue in the school just because toilets were not there. So it was actually depriving them. And it was not only depriving them, it was depriving the nation for further education. And in this 21st century, we are talking these things. Though we got independence in 1947, one after another 5-year plan, every year budget has been continued. Budget is continuing in India since 1860. 1924, first time railway budget also came. So if you look into the budget, it is too much of information are there. But really, are we focusing on doables? Micro changes, which changes has been there to all, that has to be set with. So how to really start, how to really continue, that was a big challenge. So we look into these things, and this also a great game changer. I'll share one thing at least related to LPG. Few years back, I think 4-5 years back, pre-pandemic period, I'm sharing with you. I was there in one of the program of Niti Aayog, and one DM, district magistrate or district collector, whatever name you say, one of the MP district was present there. He was making presentation. He was showing his achievement. And in that achievement, what he was mentioning, that he has declared his district as a kerosene-free district. First to declare. But interesting was not declaring kerosene-free. Interesting was how he got his district kerosene-free. He was monitoring, very young, dynamic, in early 30s. That DM was, and too much of tech savvy. So he was monitoring that what kind of consumption is taking place, and he saw that gas cylinder consumption is increasing, but kerosene consumption doesn't decrease. So he started looking into it, and then theoretically he was not able to surface it. So then practically he went, he took his team and reached to the people on the address, that ration card pe jo address hota hai, he reached to them, and
started asking ki why you are consuming both LPG as well as kerosene, and said कि नहीं हमने केरोसिन तो खरीदा ही नहीं है, पिछले कई साल से केरोसिन नहीं लिया, बोला लेकिन आपके नाम पे तो हर महीने केरोसिन इशू हो रहा है. And after doing all those investigations and finally cancelling it, of course the distribution, and I don't want to say ki why it was actual consumption was continued in that environment. So you all know we all belong to same boat, so we understand that, but ultimately he made it ki none of them are requiring it, so let's completely remove this kerosene subsidy. Now that has been through this, of course possible only through actual unique Aadhaar number, connecting it in the system, same name at two places. Otherwise, had it been manual, it should not have been possible. So don't look LPG or kerosene or food grain mere only one distribution system. It is even through digital exercise, lot of transformation is taking place. Growth, we are back. That is clear. It has been proven. Even somewhere somebody says that it is because somehow social media and electronic media sometimes is little biased and ill-informed related to talk on the subject. So be very careful on the graph. One question continuously in good number of positions it has been asked to me, okay, this data are not reliable. Sometimes data is first, report is manipulated, window dressed by the government or other governmental agency. I say fine, I agree with that. Two questions, cross questioning is there. Have you got any other way? Have you got a tool to collect the data? How much is the GDP of the country? Answer is no. तो जो आप कर ही नहीं सकते हो उस पर क्वेश्चन लगा के क्या फायदा. नाउ बट सेइंग सो एक और पॉइंट है कि ठीक है इसका मतलब एक्सेप्ट कर लें. नहीं, डोंट एक्सेप्ट इट. use your scientific tool to do that analysis, and that is what time series I was talking in the beginning. Time series talking in the beginning means it was continuing into the data and look into year after year, and it is a scientific method that if any kind of a data fudge is there, it will get surfaced when you take a time series. कभी करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. Second side of the graph is indicating that there is a unemployment and employment rates are there. What is unemployment? We all know we basically measure unemployment. Of course, temporarily because of a specific reason in 2021, there was a problem of employment because of deliberately created lockdown. Travel restrictions and very strongly travel restrictions had been followed in India, and because of that, that had been there. But minutely observe what it was in June 19 versus it was in September 22. It has already been created. We are back into the points. So this is also presented. Next is last mile. PVDG I was mentioning, the vulnerable group. All quantums are also written, how much it is given to which group and what kind of activity it is there. That has also been chalked out, and detailed budget plan has already been mentioning it. So you can have these things also. Financial assistance to be given for sustainable micro irrigation. Micro irrigation, you understand, a small land piece, a small irrigation facility that has to get created. Again, here I would like to mention it is small, only quotations are there, but solar energy activity is also mounted here. आप एनर्जी की तरफ से लेंगे, सोलर एनर्जी आ रहा है, इरिगेशन हो रहा है और माइक्रो यूनिट को बेनिफिट मिल रहा है. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सिनर्जिक अप्रोच. Similarly, more teachers to those 740 Eklavya model residential schools. 38,000 teachers are just for them. Additional 38,000 teachers are going to get recruited. आप employment के point of view से देख सकते हैं, learning के point of view से देख सकते हैं, as well as empowerment into those tribal belts देख सकते हैं. These are the way through which it is created. Similarly, Bharat Sri,
to be set up for digitization of ancient inscriptions. So many ancient inscriptions are there. It may be in Sanskrit, maybe in Pali, maybe in Maghi. So many other languages are there. But question is, modern generation is unable to read them. अब ये उम्मीद करें कि आप पहले संस्कृत सीखो, फिर अपने पौराणिक ज्ञान को, भारतीय परंपरा को समझो, उससे बेहतर है, आसान तरीका है कि जो नॉलेज बैंक है, ट्रेजर है, उसको क्यों ना ट्रांसलेट कर दिया जाए. उसके लिए भी प्रोविजनिंग की गई है, सो दैट वी कैन गेट रिकनेक्टेड टू आवर मेन रूट. और जिस समय मेन रूट में रिकनेक्ट होंगे, नरिशमेंट सफिशियंट होगा. इवन infrastructure now, that was the last mileage reaching, inclusiveness to that focus. Infrastructure is also going to get created, and understand that increased capital investment is 10 lakh crore. अब देखिए, what is capital investment? Now two expenditures are there. One is called capital expenditure, another is called revenue expenditure. Revenue expenditure is always a priority. Revenue expenditure means it is the expenditure which is on a regular basis. Pension and salary is the biggest government expenditure. Biggest expenditure. अभी आपको उसका भी statistics दिखाएंगे. And इस पूरे tough period में able to make maximum focus on the capital infrastructure, capacity building, and that capacity building is going to transform India from what India today it is to an advanced economy. And target is somewhere related to 2030. Final target 2047, but related to energy, related to port building, related to electricity, related to road, rail, all these kind of infrastructures. By 2030, it has to be up to that mark. So you will find out how it is going to work. See, just cross check. Continuation of 50 years interest-free loan. India is not possible to develop until unless all the states has developed, because India is summation of states. So states requires lot of insight, and that is something 50 years loan, interest-free loan is provision for them, so that those who need can work. And 50 years is a fairly long period for any kind of infrastructure. Highest ever capital outlay of around 2.4 trillion, that is 2.4 lakh crore into this railway exercise. Similarly, 100 transport infrastructures, creation of urban infrastructure, all these infrastructure are going to be made. Here I'd like to point out two things. First one is, look here, this graph, financial graph, which is talking about capital outlay compared from 16 to 24 budget estimate. It is 4 times development has been there, extra outgrowth. आप ग्राफ देखोगे, even 45 डिग्री से भी ज़्यादा स्टैंडिंग पे है ग्राफ, which indicates that your investment and priority has really moved to capital expenditure. This is the main part of the budget. And कहाँ जा रहा है ये money? I'll show you that also. And keeping that in mind, you are increasing your expenditure. Revenue expenditure, as I mentioned, it is uncontrolled. The pension and salary which has to be distributed, another expenditure has to be given, that has to be given. जो खर्च है तो खर्च है, देना है, आप किसी का salary कम नहीं करोगे. But here one very important point is कि आप अपने expenditure के जो deficit हैं, there has been a various kinds of deficit, but deficit is actually reducing. Look upon deficit, that is going down. So your expenditure is increasing, deficit is down, that simply indicates well management. And that is fiscal responsibility budgetary management, FRBM, which had been adopted initially in 2003, got forgotten in 2006, reintroduced in 2015, and actually self-discipline is going to continue in FRBM form. How it is going to work? Others are also there. You can look into 19 versus 22, what kind of a GST collection is there. That is very much into the central part, and it is continuously working. Now, so main, I think this figure
You people must have seen number of sites, and anywhere you will download, anywhere you will look upon, you'll find out these figures are there. These requires discussion and normally perceived as the main core discussion of the budget. Now, how it is going to work? Listen, what is the total size of the budget this time? Total size of the budget? यार बजट हैज बीन प्रेजेंटेड इन इंडियन रूपी. तुम सीधा मुझे डॉलर में ट्रेवल करवा रहे हो. अब डॉलर में ट्रेवल करवाओगे तो एक्सचेंज रेट पूछूंगा. अब एक्सचेंज रेट का फैक्टर पूछूंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा. रुपया में है, रुपया में बोलते हैं 45 ट्रिलियन, 45 लाख करोड़. उसमें 3 लाख और है. ओके, 45.0, 45.3, राइट, 03, 45.03 इज देयर. दैट अमाउंट इज रिटन. यू कैन हैव ए लुक ऑफ इट. और मैं आपके देखने के लिए अब थोड़ा बड़ा कर रहा हूं. इज इट विजिबल? 4503, ऑल अमाउंट्स आर देयर इन करोड़. सो 45 लाख रुपीस का बजट है. बट एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे. व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी प्रोजेक्टेड फॉर 23-24? कितना है इंडियन इकोनॉमी का साइज जीडीपी के टर्म में? यहीं से तो पता चलेगा ना कि कौन कितना खर्च कर रहा है, किस तरह से निकलेगा. अब एनालिसिस हो रही है. 130 करोड़. या कहाँ की बात कर रहे हो, सरकार बदले हुए बहुत दिन हो गया. यू कैन टेक इट समवेयर अराउंड 301 to 302 लाख करोड़ रुपीस का जीडीपी अपना है. आप टाइमिंग कंफर्टेबल कैलकुलेशन के लिए 300 लाख करोड़ लेके चलो. ठीक है. अगर जैसे भाई साहब को शौक है डॉलर में बात करने का, बिलियन में बात करने का, तो कंफर्टेबली 301, 302 को आप लोग 82 से फिलहाल या 81 से डिवाइड कर दो. कितना आता है करके देख लो. 3.6, 3.7 के आसपास आ जाएगा. 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. हमारा टारगेट क्या है? 5 ट्रिलियन रिसेंट, एंड बाय 2030 10 ट्रिलियन टच करना. 2030 पर तो डाउट है, लेकिन आईएमएफ भी मान के कह रहा है अब, और खास करके जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका कहना है बाय 2035 इंडिया विल क्रॉस द 10 ट्रिलियन. अब क्वेश्चन होता है वो 10 ट्रिलियन 2035 की बात कर रहे हैं, एंड इंडिया विल बी द थर्ड कंट्री टू क्रॉस द 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. मतलब हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे. 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. अब उनका कहना 2035 है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, देखना है उनको जो 2035 कर रहे हैं उसको 2030 में पूरा कर देना. ये तो मैटर ऑफ एक्सेलरेशन. इज इट क्लियर? एंड हु विल डू दैट? दैट्स व्हाट इट हैज टू बी लुक्ड अपॉन. सो पहला आपने देखा इसमें 45 लाख करोड़ का बजट है. अब 45 लाख करोड़ गवर्नमेंट के हाथ से फंड हो रहा है, और 300 लाख करोड़ का, अब लाख करोड़ को कॉमन हटा दो तो 300 रुपए में 45 रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है. यस और नॉट? व्हाट इज द परसेंटेज? अराउंड 15%. क्लियर? 15% ऑफ एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट. बचा हुआ 85% एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट है तो 100%, लेकिन 15% गवर्नमेंट खुद अपने हाथ से खर्च कर रही है, और 85% पब्लिक के हाथ से होगा. क्लियर? वो पब्लिक के हाथ से खर्च हो उसको इंड्यूस करना भी गवर्नमेंट का काम है. दैट induction is required. How induction is going to take place? So listen very carefully. What are the expenditure? कुछ expenditure is unnecessary expenditure, but that has to be there. अब unnecessary है तो क्यों है? क्योंकि वो एक evil है, लेकिन evil जो है वो necessary में convert कर चुका है. And most important example is it is going to be
So look into what are the expenditure which is very common and which has to be viewed. Say total expenditure on revenue account, it is given, that is coming out of 45 lakh crore. It's approximately 3 lakh 45,000 crores, or sorry, 34 lakh 58,000 crore is going to be on your revenue account. So 34 lakh is on revenue account, and remaining in interest payment is on 9 lakh 40,000 and 94 lakh. How you read this? 9 lakh 40,651, and grants in aid 330, again it is 3 lakh 25,000. Here on capital account 7 lakh 28,000. These are the total expenditures which is there, and this ultimately effective capital expenditure making 12 plus 13 two together is 10 lakh 53,000, and this is 10 lakh 53,000 was the graph showing 4 times from 2.5 to 10 lakh. That's a 10 lakh crore is the expenditure on the capital side. Revenue, how revenue will be coming up, from where revenue will come, that is also you can view. And here revenue will find out tax revenue. So understand government has, why I shown you first in the downside, because that was expenditure. Government is planned to have that expenditure in gross way. Simple way you can consider, गवर्नमेंट 45 लाख करोड़ खर्च करने जा रही है. 45 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट का खर्च है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, और बचा हुआ 34-35 लाख के आसपास का जो खर्च है वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंक्लूडिंग टू स्टेट्स. तो इसका मतलब खर्च जो टोटल है दैट इज गोइंग टू बी टोटल 45 लाख करोड़. Now, out of that 45 lakh crore, revenue will also be required as a 45 lakh crore. Then only your expenditure and income is going to match. So look into revenue, how much revenue is there. So revenue, if you look upon, you will find out tax revenue is coming, total is 23 lakh crore. 23 lakh 30,000 crore is the tax revenue. So out of 45 lakh crore tax revenue is coming 23 lakhs, and there is 3 lakh crore additional revenue is coming up, non-tax revenue to government. So government has got effectively total revenue coming is 26 lakh crore. I am ignoring the rest of the figures, please. So 45 lakh rupees is the expenditure, and revenue is how much? 26 lakh crore. कैसे पूरा होगा? And how much is the shortage? 19 lakh crore is the shortage here. So 19 lakh crore rupees is really now government has to organize, have to manage, otherwise there will be a compromise on the expenditure. Clear? From where they will get it? Effectively, that amount which we are talking about, 19 lakh crore, effectively it is 18 lakh 70,000 crore, including those ignored figures. So 18 lakh 70,000 crore is the shortage to the government. अच्छा 18 लाख करोड़ शॉर्टेज है कितने में? 45 लाख करोड़ में. यस और नॉट? इसका मतलब वन थर्ड से ज्यादा शॉर्टेज है, एंड दैट हैज टू बी फुलफिल्ड. सो फ्रॉम वेयर इट विल बी फुलफिल्ड? रिकवरी ऑफ लोन, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. Recovery of loan is going to give, and that is only 23,000 crore, not a big amount. 23,000 crore is going to be received. This is the plan. This is what government is expected to receive. Second amount is other receipts, not necessarily revenue in nature. Other receipts could also be there, maybe sometime penalty, challan. So many things are there. Government has got collection. That is coming 61,000 crore. 61,000 crore plus 23,000 crore, making it 84,000 crore. मान लो मोटा मोटी 1 लाख करोड़. So out of 18 lakh 70,000 crore, your
1 lakh crore is going to be received. So remaining amount is going to come from where? Borrowings. That is a very important point, borrowings. So remaining amount is borrowings. Now here, if remaining amount is borrowings and look upon what is this amount? What is this? If you consider this amount particularly, this is your interest payment. This is the interest payment. And since it is interest payment, out of 45 lakh crore rupees, 10 lakh crore rupees you are paying on interest. Second highest expenditure. Capital expenditure I was highlighting too much, but 10 lakh crore is going on interest. तो अब आप 10 लाख इंटरेस्ट में दोगे और बोरो कर रहे हैं, क्या होगा नेक्स्ट ईयर? इंटरेस्ट विल फर्दर राइज. That is an actual trap. We have to be very careful how this trap is going to be taken care. Because आप क्या कर रहे हैं, लोग आपका पिछला भी डेफिसिट बजट था, सीरीज से डेफिसिट बजट रन कर रहा है. अब डेफिसिट बजट मतलब खर्च ज्यादा, एक है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. यहाँ फिलहाल आप कह सकते हो कि नहीं जी, आमदनी 60 पैसा, 65 पैसा, खर्चा 1 रुपया, 35% का जो हमारा डेफिसिट है, आप उसको पूरा करने के लिए फिर लोन ले रहे हैं, फिर लोन बड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट और बड़ा होगा. एंड दैट हैड बीन ए मूव. सो क्वेश्चन इज इट रियली मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट? दैट हैज टू बी क्रॉस चेक्ड. बिकॉज नो डाउट यू आर ट्राइंग टू रिसीव. कुछ पिछले कई साल से ये भी सोचा गया कि why not sell off the asset? Some of the sell off assets, which is very fancily called in the normal market, is called disinvestment. So disinvestment has to take place, but those disinvestment drive has also not been able to achieve the target because of various reasons. So this time that disinvestment is also on a lower side, not on a bigger side. So disinvestment is on a lower side. Your receipt is not coming completely, then it is going to create huge problem afterward. That has to be cross checked. So let's look into, compare it with the past, okay, really it is improving or it is not improving. So that's a view. First one, here it is from where rupees comes. That's a view is there. And rupees comes and rupees goes. You'll find out this is the amount, how much paisa is coming, how much percentage is coming. It is 22, 23. Last year budget, how much is there? Is it clear, visible? 35. So 35% is taken care through the borrowings. Of the total expenditure, you are borrowing 35% and meeting your expenditure. This time if you compare, how much is this figure is coming? 34. So at least even in a tougher situation, government is increasing 33% capital expenditure. ज्यादा खर्च कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बोरोइंग भी कर रहे हैं, बट ओवरऑल बजट का जो बोरोइंग हिस्सा है, जो पिछले साल 35% था, अभी घट के 34% हो गया. Look into the interest component, because when you view the interest one, you'll find out it is again maintained. How much is the interest component? This figure is there, that is 20. So every rupee you spend, 20 rupees 20 paisa goes to your interest payment. And this time also, if you compare, this is also interest payment 20 paisa. So your loan burden is reducing, interest payment is not increasing, and next to that is very important is your deficit exercise. And again here macroeconomic component, fiscal deficit, revenue deficit, effective revenue deficit, and primary deficit. These four deficits are there. Most important deficit is the fiscal deficit. Fiscal deficit is total revenue minus total expenditure. If it is coming as a negative, it is deficit. तो गवर्नमेंट का टोटल खर्च कितना है और डेफिसिट कितना हो रहा है,
तो अभी डेफिसिट कितने का था? गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है वो कितने का है? 18 लाख करोड़ का। अब 18 लाख करोड़ को अगर आप काउंट करेंगे टोटल जीडीपी का परसेंटेज, हाउ मच इज द टोटल परसेंटेज ऑफ जीडीपी? जीडीपी का साइज क्या बताया अभी? व्हाट इज द जीडीपी साइज? 300. So 18 upon 300, how much it is coming? 18,000, 18 lakh crore upon 300 lakh crore. How much is the total amount? 6% approximately. Actually, effectively, it is 5.9%. I have mentioned it is 302. Is it clear? So 5.9% is deficit. अब क्वेश्चन उठता है कि is it that a bigger deficit? Fiscal deficit is a big deficit or a normal deficit? Look this deficit one. Is it visible to backside? Look upon this deficit. How much is there? The upper line is your fiscal deficit. Blue line is your fiscal deficit. And the year, if you talk about, it has been compared from 13-14. 13-14, you know. 13-14 is there. 13-14, if you consider, you will find out here it is how much it was there? 4.5%. It kept on coming till 2018-19. 3.4% it has come. Means pre-pandemic effort of the government to make the fiscal discipline, there is a word called fiscal discipline, was very much effective, and government was able to reduce the deficit without compromising on the expenditure. Rather rationalizing the expenditure, government was in a position to reduce it. Suddenly what happened? Your you your this expenditure has gone very high, deficit has touched to 9.2%, and undoubtedly you know which year it could be. It has to be pandemic period when you are not earning and eating, sitting at home. Certainly it will be a deficit. So two theoretical question here. Later on you will keep on learning in your book, but I thought since relevance is there, I will talk to that theoretical question also. How much deficit should be allowed or acceptable as per the government policy? Fiscal deficit. How much deficit should be there? As per FRBM, FRBM stands for Fiscal Responsibility and Budgetary Management. It should be 3% of GDP. Fiscal deficit should not be more than 3%. Am I clear? किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 3% से ज्यादा. गाइडलाइन कहाँ है? FRBM Act 2003. Clear? और revenue deficit should not be more than 2%. तो revenue deficit 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Fiscal deficit 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. That's a one aspect, conceptual, theoretical. Second aspect of it, 9.2%. Fortunately, I had opportunity to discuss these things on even electronic platforms, and people had got different mindsets. You may be critic to the government and you say it is very high. So first comment was there, government is a smart, government is not showing the total expenditure. It can be. So when total expenditure is not actually captured through budget, गवर्नमेंट को मना किसने किया? पोस्ट बजट फिर एक्सपेंडिचर कर देगा. हो सकता है ना. आप अभी क्या दिखा रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं. टोटल एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं और उससे रिवेन्यू को मैच करके फिजिकल डेफिसिट बना रहे हैं. कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो बाद में एक्सपेंडिचर कर देंगे आप, जो शुरू में दिखाया हुआ नहीं था, तो डेफिसिट तो बड़ा हो जाएगा ना. तो आपने एक तरह से कहिए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर दिया बजट में. दैट फियर, दैट डाउट कुड हैव बीन, so that doubt had been there earlier. I said how much you feel? 9.2 may go to 10%, 10.2%, 11%. I'm giving you this part because 0.1 is also very big amount for India. Very big amount. So कितना होगा? 10% के आसपास आप डेफिसिट, आपकी बात मान लिया.
10% हो गया, गवर्नमेंट ने 9.2 स्मार्ट बनने के लिए दिखा दिया. But I can give you the example during that period, 21% deficit, 14% deficit, 17% deficit, so called advanced economy. हम बोले आप इनको क्या कहोगे जिनका डेफिसिट 21% है. इंडिया तो फिर भी डिसिप्लिन्ड वे में आपको 9.2 दिखा रहा है. तो एक्चुअली आपको ये समझने की जरूरत है कि ये डेफिसिट किस कंडीशन में आ रहा है. एंड दैट कंडीशन है, जैसे आप में से भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बिगर एक्सपेंडिचर होगा, तो रिजल्ट विल बी देयर दैट more and more scarcity or deficit will appear at during that period of time. That is what it is visible. But I'm highlighting that line. Even this is very current budget. 5.9% of the total, GDP is going to be your fiscal deficit, and fiscal deficit is what total deficit of the government is there, and the kind of slope and graph you are finding out, it clearly indicates. And in this condition where all those free food or free distribution has been there extended till last of the year, ये भी नहीं है कि आपने खर्चे में कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. So that is what best exercise can be viewed. So I'll try to finish faster so that I can have question answers from you. But look into taxation. That has got a growth. Growth of taxation has been there. Then even this you look, trend in the tax receipts. Three lines are there. Red line which is coming as the gross tax receipt. Green line is your indirect taxation, and direct taxation is there. Again, here also I like to mention one theoretical part. Slowly this yellow one should reduce and green one should increase. Reason is very clear, that yellow one is direct taxation, where a lot of evasion possibility is there, and the indirect taxation, there also evasion is there, but now through digitization and other things it works, and people are compulsorily ready to pay, and inbuilt taxation is there. So inbuilt taxation you are compelled to pay. I may be moving in Mercedes and saying that my income is not high and I'll not be paying my income tax. And whatever I'm saying, I have deliberately used the word which is that not true. Okay. But so many eyes are there in India. They simply say they don't have taxable income. But when they buy fuel for that Mercedes, the petrol they get refilled, which is indirect tax, inbuilt indirect tax, they are bound to pay. They are bound to pay. And that's why indirect taxation is a better way to collect the taxation, rational way to collect the taxation rather than direct taxation. That's why I said this should be the route. That has to be there. Second, if direct taxation is there, I am bound to pay and normally deducted at source. So that has to go there, then and there, helpless. And those don't have the defined source, they can have no taxation, tax evasion. So two things are working together. But suppose that direct taxation is reduced and indirect taxation is there, let's say for again petrol consumption, and if I want to reduce my expenditure, I can rationalize my travel, use and consumption. By rationalizing my consumption, I can even manage myself a best tax management. It could be possible. So that's a view which has to be there. Third, if economy is not working good, how come these taxes are getting collected? The slide which I had shown you, the slide which I indicated, look minutely. This one, the upper right corner, you'll find out 2022 versus 2019, which has been there, and 2022 is a clear-cut upside of GST collection than the downside. And what is GST? It is actually applicable on productive activity or services, goods and service tax. तो जब तक ये सर्विस नहीं हो रहा,
गुड्स बिक नहीं रहा है तो टैक्स कैसे आ रहा है? तो टैक्स इवेजन हैज गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. Now evasion is to that extent not possible because of digitization. Now this is not time being for you all because it is for government. Effective capital expenditure also for government. Yes, one thing I like to say, this is what the expenditure, major expenditure is there. One important major expenditure is related to, first is the top expenditure which is there on the upside. Word is pension. Second one is defense. And third one is subsidy. Pension, defense, subsidy. Subsidy, if you look upon, deliberately I have calculated and I have indicated subsidy is there. It is a matter of discussion whether subsidies should be there, not should be there. If it should be there, how much should be there? Those are the subsidy components. But subsidy is more than 5 lakh crore rupees. So more than 5 lakh crore rupees subsidy simply indicates that it is a very big amount, and that indicates simply that it should be rationalized. Kitna subsidy hona chahiye? How much subsidy ought to be there? And this is only union government we are talking about. We are still not talking about the state government, which they themselves provide the subsidy, and it is one of the biggest leakage. आपको लीकेज सिर्फ दिखा रहा हूं कहां कहां लीकेज है, जो कभी आपको डायरेक्टली मैक्रो लेवल पर सरफेस पे लीकेज नहीं दिखेगा. So 5 lakh crore rupees is in the form of subsidy, and I'm again saying it is a matter of debate ki how much it ought to be there. And people immediately, some social scientists will stand up and will say, what exactly you are talking about? So much of the people are there who are not able to afford for and they require subsidy. Okay, I said, fine, it is. My two question is there. How much it ought to be and how long it ought to be? Kitna or kab tak? That has to be decided because it is not giving that opportunity for the good merit expenditure. And if merit expenditure is not coming, it disturbs the growth of economy. These are the certain root causes which has been there. And this graph, or rather you can say a kind of a segmentation, indicates सबसे बड़ा कौन सा piece है लेफ्ट साइड में, and that is basically interest. So आपका ये पूरा expenditure matrix है, and that expenditure matrix, the left side it is interest. So look into how much interest is going to be paid. This is overall profile, how it moves faster, it comes and it goes, the entire thing. Because if you minutely observe, you'll find out different balloon size has been there, and entire amount wise it movement has indicated where it is going, how it is reaching, how it is spent. In complete cycle has been mentioned. Which cycle I have tried to give in the form of ministry wise. Ministry wise, you look into defense as the highest. It is a necessary evil. Why defense is highest? Because we have got very love, and peaceful neighbors. So loving neighbor, peaceful neighbor, defense is there. Second one is our transport is this time it is going to be met. Understand, 4% increase in infrastructure investment leads to 1% increase in GDP. That's what World Bank study indicates. I am repeating, 4% increase in infrastructure investments or expenditure will lead to 1% increase in the GDP. So if you want to increase 1% increase in the GDP, you have to make 4% additional infrastructure investment. Clear? And we are looking how much infrastructure investment government is thrusting upon. So from where it is not mere a statement that GDP will grow or sustainability will be there. That sustainability comes from capacity building. That sustainability comes from infrastructure formation. And main infrastructure is your road,
transportation is the main infrastructure, power generation is another main infrastructure, and third one is micro or software infrastructure like education, insurance, financial services. These all are infrastructure. How best banking system can operate, and see the per unit cost of servicing has reduced because of digitization. How digitization is going to transform, because it's at a lowest cost, lowest price. पहले का बैंक कुछ और था, अब बैंक कुछ और है. पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सर्विस, per person, per customer, per account holder cost of service was very high. Now it is low, and that is what the betterment is coming up. So these are the certain things which has I had to indicate. And last slide is this, and this last slide is actually interested, which is much more talked upon. You all know I don't have to share too much on this, but this is also good. And at least as a service holder, I also feel very happy about it. Maybe minor satisfaction, temporal satisfaction, but at least satisfaction comes. सुन के अच्छा लगा. That's the first thing. कि थोड़ा बढ़ गया, ऐसा महसूस होने लगा. अप्लाई 1 अप्रैल के बाद से होगा, अभी से ही खुशी हुई, और जब तक अप्लाई होगा फील पता नहीं चलेगा आपको, राइट? ये ऑलवेज होता है, but that good feel is there, effect is there, and that is coming up. I don't want to discuss too much on it because this is the area normally I have seen most discussed, and it is for a common people, not for professional like you who are pursuing management, because you have to more focus on economic dimension, international dimensions. Yes, it is required. So requirement is there. Few years back, government has introduced alternative tax system, old scheme and new scheme. Old scheme is full of windows, दोनों तरफ window है, and those windows you all know. I think whether you are a student of taxation or not, सेक्शन सबको कुछ कुछ सेक्शन याद रहते हैं, और सेक्शन 80 से स्टार्ट होने वाला तो बहुत याद रहता है, वो याद रहता है. ऐसे so many sections are there to the business people. even जो सेक्शन हम लोग इंडिविजुअली याद नहीं रखते हैं, they have the benefit. and बहुत पहले, आज से बहुत पहले एक पर्सन थे जिनको मैं काफ़ी फॉलो करता था, और उनके बजट एनालिसिस को सुनने के लिए फर्स्ट डे, जिस दिन बजट होता था, शाम में बजट प्रेजेंट होता था उस समय, इवनिंग टाइम बजट, और नेक्स्ट डे उनका बजट एनालिसिस मुंबई में होता था, और उसके नेक्स्ट डे दिल्ली में होता था. और मैं कहीं भी रहूं, मुझे डेट मालूम था कि 28 फरवरी नॉर्मली होता था बजट प्रेजेंटेशन डे. तो फर्स्ट सेकेंड जो डेट था, मैं ब्लॉग रखा, कहीं नहीं जाना, वहाँ जाना ही जाना है. फिर भी कई बार पहुँचते पहुँचते लेट हो गया, तो स्टेयर्स पे बैठ के, खड़े होके बजट सुनते थे. उनको टैक्स गुरु माना जाता था, और उनका कहना था कि आई एम मोस्ट कंफ्यूज्ड पर्सन रिलेटेड टू इनकम टैक्सेशन with respect to sections. I don't know why these many sections are getting created. मैं जिन पर्सनालिटी का नाम ले रहा हूँ, उनका नाम है नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला. आप लोग कभी पढ़ेंगे वी द नेशन, उनकी अच्छी बुक है, रीड देम. और वो अपने काफ़ी मेच्योर एज में, आप इतना ही समझ सकते हैं कि वो लीगल एक्सपर्ट्स थे. इंदिरा गांधी को जेल से निकालने वाले वही थे, इंदिरा गांधी का केस लड़ने वाले पर्सन थे. तो आप कभी उनके बारे में पढ़िए, टैक्स गुरु माने जाते थे, लीगल तो एक्सपर्ट्स थे ही. और उनका ये स्टेटमेंट था, और उनका उस समय 95 क्या 94 या 95 के आसपास का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कि उस समय स्टेटमेंट था कि इनकम हुआ माइनस टैक्स डिस्पोजेबल इनकम, कहानी खत्म. और मैं उस समय सीएफए परस्यू कर रहा था, सीएफए स्टार्ट कर दिया था पढ़ना. मैं बोला कितना आसान हो जाएगा, एक पेपर घट जाएगा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है घट जाएगा.
दूसरे पर्सन आए, दैट पर्सन नेम वाज विजय केलकर। संयोग से उनके साथ भी मेरी काफी मुलाकात रही। अच्छा, मेरी थोड़ी आदत है कि लोगों से सीखने का जहां मौका मिलता है मैं उठ के बीच में भागता नहीं हूं, चाहे कितना बोरिंग लेक्चर हो जाए। ये तो मेरी आदत है और यही मेरा स्ट्रेंथ बनता चला गया। और जब वो विजय केलकर साहब, आप लोगों को शायद, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोग हो सकता है अभी इन्फॉर्म नहीं होंगे, गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म की बात की। दो टैक्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के रिफॉर्म की बात उठी। और डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म को डीटीसी कहा गया, डायरेक्ट टैक्स कोड, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन को क्लब करने की बात हुई, कहा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। रिपोर्ट जीएसटी का सबमिट 2004 के फरवरी में गवर्नमेंट के पास हो गया, फरवरी में। नेक्स्ट ईयर पिक करने की बात उठी, 5 फरवरी, क्योंकि उस समय मैं बजट एनालिसिस करता था, 5 फरवरी को वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट किया गया। वोट ऑन अकाउंट कहते हैं ये जो छोटा वाला, जो अगला वाला प्रोजेक्ट प्रेजेंट होगा ना, जब इलेक्शन होता है उससे पहले पूरा बजट प्रेजेंट नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा कि ये लास्ट बजट है इस गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है, अगली बार भी बजट आएगा इस गवर्नमेंट का, लेकिन मई में इलेक्शन है, हर कोई जानते हैं। अप्रैल मई में इलेक्शन होगा, तो वो जो अगला बजट आएगा वो 2-3 महीने के लिए ही होगा। अगर गवर्नमेंट बदल गई तो कुछ भी बदल के कर सकता है। और गवर्नमेंट अगर अगर यही कंटिन्यू की तो ये गवर्नमेंट फिर से नया बजट पेश करेगी समवेयर में भी जून जुलाई। इसीलिए ये बजट को फुल बजट, लास्ट बजट माना गया। तो वही 5 को, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, जो ब्रिगेडियर जसवंत सिंह, वो प्रेजेंट किए थे बजट, वोट ऑन अकाउंट बजट। तो जो बजट था उस समय, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। केलकर कमेटी रिपोर्ट, जीएसटी इंप्लीमेंट करने की बात थी। कब की बात कर रहा हूं, ईयर 2004। समहाउ गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगली बार गवर्नमेंट आएगी, और वो लोग कॉन्फिडेंट थे, और रादर आई से ओवर कॉन्फिडेंट थे। और ओवर कॉन्फिडेंस का पहचान क्या था? एक्चुअली गवर्नमेंट वाज कंप्लीटिंग 5 years इन द मंथ ऑफ नवंबर। अक्टूबर नवंबर में 5 साल पूरा कर, नवंबर में 5 साल पूरा कर रहे थे, और नवंबर में 5 साल तो इलेक्शन होना चाहिए था सितंबर अक्टूबर में जाके। कुछ स्टेट एनडीए गवर्नमेंट जीत गई, और जीतने के बाद उनको लगा एवरीथिंग इज फाइन and government is really sounding everywhere. So resultant is they preponed election 6 months in advance. कि हम तो आ रहे हैं, they were overconfident. And ultimately somehow India signing everywhere was the slogan. After 24 years of time, balance of payment was in current account was in surplus. तो ये सब अच्छे अच्छे फील्ड्स थे। नॉर्थ ईस्ट साउथ कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ऐसे एक से एक प्रोजेक्ट थे जो प्रोजेक्ट इंडिया को आगे बढ़ा रहा था। और politically they were somehow wrongly calculated or estimated themselves. They lost the things, and उस समय का लॉस किया हुआ 2004 का जो रिपोर्ट सबमिशन था जीएसटी, 2004 के बाद जो गवर्नमेंट आई 2014 तक, उस गवर्नमेंट ने जीएसटी पे कंसेंसस नहीं बना पाई। 10 years it waited. अभी कितना इंप्लीमेंट हुआ है? इट इज हार्डली 35%. Why I am saying 35%, even not 35%, less than that, because मैं मान के चलता हूँ, we have seen green line and yellow line together as a more or less equal. तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट टैक्स कोड की बात, अभी डीटीसी तो बहुत लोग जानते भी नहीं है कि डीटीसी है, डायरेक्ट टैक्स कोड की तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन बहुत हद तक रेशनलाइज धीरे धीरे इस गवर्नमेंट ने कर दिया है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पुट इट, कि कैसे चेंज हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 50% तो वो रिफॉर्म है डायरेक्ट टैक्स का, 50% इधर लेते हैं। 50% इधर मीन्स ऑल टैक्सेस शुड कम टू ओनली वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। दैट वाज देयर। व्हेन वन नेशन वन टैक्स यू आर गोइंग टू मेक, दैट इन दैट केस you have to have every tax merged into one. Unfortunately, the biggest revenue maker of any state, two of the components are there. One is called fuel, petrol, diesel, and second one is alcohol. ये दो ऐसे टैक्सेशन हैं जो सबसे बड़ा टैक्सेशन है,
और स्टेट इस पर से अपना नियंत्रण हटाना नहीं चाहती। ये स्टेट जो है वो, और जीएसटी फुल फ्लेज जीएसटी इंप्लीमेंट आज तक नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कोई स्टेट नहीं चाहती है कि जीएसटी पूरा ये जो कंपोनेंट उसके हाथ में है उसमें चले जाए। और इतना ही नहीं, आप जानते हो सोशली भी वो डिसाइड करते हैं कि जब वो बेस ही नहीं रहेगा, जब आप कह दोगे ड्राई स्टेट, तो स्वाभाविक है उसमें कोई फैक्टर नहीं आता टैक्स का। और ड्राई कितना ड्राई है, बिहार बेस्ट एग्जांपल है, ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है, लेकिन टैक्स नहीं है कलेक्शन वहां पे इसका। अच्छा, बिहार जब ये डिसीजन लिया था 2015 के बाद, तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। कोई अमीर कहे कि आज से हम ये काम छोड़ रहे हैं, तो समझ में आता है अल्टरनेट सोर्स है, आगे नहीं। ओके, प्लीज। सो ये जो एक क्वेश्चन है, क्योंकि अल्टीमेटली यू वांट योर रेवेन्यू, एंड फॉर रेवेन्यू यू आर नॉकिंग, यू आर नॉट एबल टू हैव योर डेवलपमेंटल इकोनॉमी, यू आर नॉट हैविंग योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू आर नॉट हैविंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड, बिकॉज यू से you don't have fund, and you are ignoring the opportunity of fund. Had it been really that much social, reformer and changer, that even not a single bottle should have been available in the state, then only it should have been there. So implementation is poor, but philosophy is high. That is somewhere it is dichotomy. That is not right. So that two reasons. Even third is called property tax. Stamp duty लगता है. That is also a state. So question arise here that फिर जीएसटी पूरा इंप्लीमेंट कहाँ हुआ? तो छोटे छोटे चीजों को लाके, गुड्स एंड सर्विस पे लाके, एंड उसी को आप खेल रहे हो बच्चों की तरह, कभी उसको 28 से 22, 18, 12, I don't know how you are playing with that, and you are actually, it is a dynamic tax calculation, and every time they go together, और मेरे ख्याल से अभी तक तो शायद 50 मीटिंग हो चुकी होगी, 50 मीटिंग्स, you look into the tax committee meets. तो अब जो क्वेश्चन उठता है कि आप क्या चाहते क्या हो, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन इज रिक्वायर्ड, एंड सिंस टैक्स हैज बीन देयर, and direct taxation mein what should be the right one? I can give you one formula, and I'm sure it must not be commonly discussed, so you can understand this taxation philosophy. Taxation also starting from Atharved to Ramayana to Kautilya, so many places tax has been discussed. I'm giving you only crux. Even in the present era, how tax has to be decided. Whatever your total income is there, total income divided by total population, whatever income is coming, that should be tax exempt, rest is taxable. So question उठता है कि क्या इंडिया में टैक्स ज्यादा है या कम है, जहां से स्लैब स्टार्ट होता है, तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? 140 करोड़। चलिए 140 करोड़, थोड़ा सा हम छोटा का आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड व्हाट इज द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया? फिर बोलूंगा 300 लाख करोड़, राइट, 300 लाख करोड़, और आप पॉपुलेशन कितना बताए? 140 करोड़। 300 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 140 करोड़, हाउ मच इट इज? जल्दी कर लो भाई, करोड़ करोड़ को हटा दो, 300 लाख को डिवाइड कर दो 140 से। नहीं आ रहा है? टाइम्स नहीं चाहिए मुझे, अमाउंट चाहिए। 2.1। अगर मान लो 130 करोड़ ही पॉपुलेशन है, तो थोड़ा सा डिनोमिनेटर कम कर देता, फिगर बड़ा हो जाएगा। 130 करोड़ मान लो, 2.30, वेरी गुड। और लाख भी बचा हुआ होगा, तो ऊपर लाख करोड़ था, नीचे सिर्फ करोड़ है, यस और नॉट? 2.3 लाख। थंब रूल सेज दैट 2.3 लाख तक के इनकम को एग्जम्प्ट कर दो टैक्सेशन से, उसके ऊपर टैक्स लगा दो। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब बताओ आप कि अगर आपको 3 लाख और 7 लाख की कहानी कही जा रही है, क्या हाई टैक्सेशन है? सो दैट्स द वे। अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन, पॉइंट नंबर 1। जिनको टैक्स पे करना चाहिए सब टैक्स पे करेंगे, तब जाके टैक्स रेट कम होगा, बिकॉज गवर्नमेंट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर।
Is it clear? So many formulas are there related to taxation, but time being I am not discussing here tax. That's why I said. तो इन्होंने कहा कि अब क्या करना है, पिछले वाले को टच नहीं किया गया है, तो आप पिछले वाले में जो बेनिफिट मिल रहा था आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। 50,000 का जो सरचार्ज था वो यहाँ भी नए वाले में भी दे दिया गया है, 50K का सरचार्ज। तो इफेक्टिवली 3 लाख नहीं बल्कि 3.5 लाख के बाद आपका टैक्सेशन गेम स्टार्ट होता है, राइट। आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है और इधर कितना बेनिफिट मिल रहा है। इधर एक ही रेशनलाइजेशन हुआ है, एंड दैट रेशनलाइजेशन इज that instead of 6 slabs it has become 5 slabs, and because of 6 slabs there was a 7 category, so now it is 6 category. Starting from 2.5 lakh it is now 3 lakhs, and सीधा कैलकुलेशन है 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 and onward. क्लियर? थोड़ा सा और इनकम को, अच्छा व्हाट इज द सोशल इकोनॉमी? सोशल इकोनॉमी सेज कि नाउ आई give you the I'm giving you the second step of the taxation. First step of the taxation was there that this should be the minimum which has appeared as per our calculation. 2,30,000 should be the tax free. Beyond that, tax should be charged. Okay. Now second step is there that someone is earning very high and someone is earning low. ये जो 2,30,000 के नीचे वाले हैं या बीपीएल के नीचे वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, हाउ दे विल बी लुकिंग अपॉन, हाउ दे विल बी मीटिंग द रिक्वायरमेंट? सो तो क्वेश्चन उठता है कि इट इज द सोशल इक्विटी, social care required. So those who have got higher income, that higher income person will be paying for the lower income people. So it is higher income has got higher taxation. This is called progressive taxation system, and not only progressive taxation system, even there is a concept of surcharge. इसका मतलब ऊपर वाला तो ज्यादा टैक्स देगा ही देगा, इवन वो सरचार्ज भी देगा, एंड सरचार्ज वाज एज हाई एज 37%, which is actually indicating has been reduced now to 25%. मतलब उस ऊपर वाले को भी थोड़ा रिड्यूस किया गया है, 25% का सरचार्ज दे रहा है। इज इट फाइन? जैसे लीव इनकैशमेंट वगैरह भी है, सैलरीड क्लास पीपल एंड अदर, दे अंडरस्टैंड अर्लियर कैप वाज 3 लाख रुपीज set in year 2002, now it is increased to 15 lakh rupees. 15 lakh rupees is also given. So that is the total amount it has been put to. So taxation में आप simply इतना ही है, it is considered now called as a default taxation system. Under the default taxation system, income है, expenditure है, sorry, income है, taxation है, tax दीजिए, बचा हुआ disposable income बनेगा। कहीं ना कहीं से आप ट्रैक हो जाएंगे, because now tracking system is available. So एक कंसर्न जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार पूछा जा रहा है, आप पूछें उससे पहले मैं आंसर दे देता हूं। कॉमन क्वेश्चन है कि पुराने तरीके वाले में तो फोर्सफुल सेविंग होती थी। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहा है कि सर जब मुझे फायदा ही नहीं होगा तो मैं ना इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करूंगा, ना पीएफ में डालूंगा, ना इधर करूंगा ना उधर करूंगा, जितने सेविंग वाले जो सिस्टम थे उसमें व्हाई आई विल बी अट्रैक्टिव। ये एक फैक्ट है, and that is what again in an advanced economy, that is also philosophy. Saving should be meant for saving, not for the tax saving. Government has got a responsibility to take care of social security, so government has to take care social security. तो ये लाना होगा। अब ये इट इज अ मैटर कि पहले वो आए तब होगा या साइमल्टेनियसली चलेगा, दैट इज अनदर डिबेट इशू। आई डोंट माइंड इट, यू कैन रियली थिंक ऑफ ए गवर्नमेंट को थोड़ा रुक के ये काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने पुराना हटाया नहीं है, गवर्नमेंट रुकी पड़ी है, old is also available. You feel you are fit and you are able to save some extra amount through old tax filing, go ahead with that. That is what it is going to be. Government social security क्या ला रही है? सबसे पहले medical security, there is called आयुष्मान benefit is there. For poor people it is pension scheme, is also called अटल pension scheme. So आप अगर गवर्नमेंट के स्कीम को मर्ज करके आप बजट को देखेंगे तब जाके आपको बजट के इफेक्टिवनेस का पता चलेगा कि how it is there. It can't be discussed in isolation. So this is the point I am stopping, looking for you. I have exactly decided for 90 minutes. Look upon the watch, I am in 90 minutes ready for your point to come out. Any question?
you keep on asking. Now time is not the bar. Yes. टारगेटिंग फंडिंग मीन्स इतना स्पेंड करना है. प्लीज एक्सक्यूज मी, हियर्स अ क्वेश्चन कॉल्ड टारगेटिंग फंडिंग किस तरह से एग्रीकल्चर में होगा. एक्चुअली दो तरह से होता है. टारगेटिंग फंडिंग कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. एंड व्हाट ही डिड, जब पहले क्या होता था, पहले उसके पहले को समझेंगे तभी टारगेटिंग फंडिंग भी समझ में आएगा. पहले था क्योंकि then when budget used to be made or even for that sake plan used to be made, तो जो एक्सपेंडिचर होता था वो बजट के अकॉर्डिंगली या फंड के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होता था. फंड अवेलेबल है, इतना ही कर सकते हैं. तो जो फंड के अवेलेबिलिटी पे पॉइंट करने लगे तो रिजल्ट क्या होता था, इंडिया इज ए पुअर कंट्री एंड पुअर कंट्री होने के कारण हम बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे. व्हाई इंडिया इज नॉट एबल टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, व्हाई इंडिया डजंट हैव रोड टू एवरीवेयर, बिकॉज इंडिया इज अ पुअर कंट्री. पुअर कंट्री मीन्स योर रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, यू डोंट हैव दैट मच रिसोर्स. तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ. तो ये लगा कि ये मिशन तो बहुत लंबा होकर चला जाएगा, और लंबा होने का मतलब हो गया कि इट विल टेक आई थिंक अनदर 50 to 100 years of time to do all those needful. So what Mr. Bajpayee started as a prime minister and not fully empowered, बड़े गठबंधन की सरकार थी, and what he started, let's make it target one what we need. तो क्वेश्चन उठा, पावर की जरूरत है. उसका एक दूसरा कारण भी था कि 91 में वी हैड ओपनड आवर गेट, और 91 में जब गेट ओपन हुआ तो 94, 95 या 96 आते आते अगले 5 साल में एक्चुअली इंडिया का ग्रोथ स्टार्ट हुआ. और जब ग्रोथ स्टार्ट हुआ देन दे स्टार्टेड नीडिंग एयर इंफ्रास्ट्रक्चर. नहीं है हमारे पास पावर नहीं है, करी कैसे. कोई बाहर से आके एफडीआई आके आपको फैक्ट्री तो लगा सकता है, लेकिन आप उसको क्या रोड प्रोवाइड कर रहे हो, क्या पोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप उसको हॉस्पिटल दिखा पा रहे हो. हॉस्पिटल है, कोई अपने फैमिली को लेके यहाँ आ रहा है, माइग्रेट कर रहा है या स्टेशन कर रहा है, क्या वो दे पाएगा. उसको लगेगा कि ये सेफ प्लेस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा. तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जरूरी हो गया कि दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू गेट क्रिएटेड, एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, so what he started with power and road. इसीलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना था. ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, हर हाल में रोड का जाल बना दीजिए, रोड का जाल बनाइए, रेलवे ट्रैक का जाल बनाइए. जो लेटर ऑन कंटिन्यू हुआ, इस सारे गवर्नमेंट बदली, लेकिन एक्सेलरेशन डिएक्सेलरेशन के साथ दैट मोमेंटम हैड बीन कंटिन्यूड टिल डेट. इट इज वर्किंग एंड फैंटास्टिकली आवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर गडकरी इज डूइंग द जॉब. क्लासिकली ही इज डूइंग द जॉब. सो अब क्या कर रहे हैं, टारगेट में क्या हुआ कि जो मेन मुद्दा था कि आपको पूरा का पूरा करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए. मैं बताता हूँ, 98 में जब ये पॉलिसी डिसाइड हुई थी पावर की, तो 60,000 करोड़ रुपीज वॉज नीडेड. 60,000 करोड़ रुपीज के लिए हुआ भाई, गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है, बिजली बनाना काम नहीं है. 60,000 करोड़ इसको दे देंगे तो फिर दूसरे को क्या करेंगे. और अभी आपको मैंने एक्सपेंडिचर दिखाया, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो बंदे बनाए हैं. आपको सैलरी पहले देना है, पेंशन पहले देना है, रेंट पहले देना है, सब्सिडी पहले देना है, तो फिर आप 60,000 पावर के लिए कहाँ से लाओगे. ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ. तब वहां गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, और पॉलिसी चेंज करने के बाद सबसे बड़ा पॉलिसी हुआ कि हम इस प्रोजेक्ट को डाउन नहीं करेंगे, 60,000 करोड़ को जनरेट करने का नया प्रोजेक्ट बनाएंगे. और वो प्रोजेक्ट पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया. 98 आई एम टॉकिंग, जो बढ़ते बढ़ते 2002 में 1,20,000 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट आया. आज हम उसी को गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा के, आपको मालूम होगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, दैट इलेक्ट्रिफिकेशन, और पता नहीं कितने कितने स्कीम रन किए. मोटिवेशन वहां से स्टार्ट हुआ कि नहीं, सबको इलेक्ट्रीफाई करना है. पर जहां से पैसा आएगा, पैसा आएगा कहां से आएगा पैसा, वही क्वेश्चन, बोरोइंग. तब हुआ प्रॉपर्टी बेचो, जो हमारे काम का नहीं है या जो हमें नहीं चलाना है उसको बेच के ले लो. एंड दैट वाज व्हाट डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव स्टार्टेड. एंड यू नो, disinvestment, first disinvestment was made, that was a modern food, followed by biggest disinvestment was made in year 2002 called balco case was there. अगर आप ये सब हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, यू विल फाइंड आउट फैंटास्टिक जर्नी वी हैव मेड, एंड लॉट ऑफ गाइड हैज बीन देयर. और वो ट्रैवल हुआ, बालको में बहुत हंगामा हुआ कि ये वैल्यूएशन सही नहीं है. और तब फिर गवर्नमेंट की गलती नहीं थी,
लेकिन वैल्यूएशन रियली पुअर हो गया था, वैल्यूएशन टेक्निक गलत था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस पूरे प्रोसेस को अच्छा करने के लिए देयर हैज टू बी आईपीओ और एफपीओ रूट्स। लेट्स पब्लिक रूट, अगर लोअर प्राइस भी है तो पब्लिक को फायदा होगा। और वहीं से जब एनटीपीसी, एनएचपीसी ये सब का प्राइवेटेशन हुआ, ऑयल इंडिया लिमिटेड, सीसीएल, कोल, कुकिंग कोल लिमिटेड, इन सब जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं सब देखिएगा पब्लिक रूट से हुआ है, सबके शेयर्स आए और शेयर्स के थ्रू डिसइन्वेस्ट हुआ है और गवर्नमेंट फंड जनरेट किया। दैट वाज टारगेट फंडिंग। अब एग्रीकल्चर के लिए एक्स अमाउंट चाहिए आज के डेट में। एग्रीकल्चर के ग्रोथ को, उसके डिजिटाइजेशन को, उसके ऑटोमेशन को रोकना नहीं है। उसके लिए जो पैसा आएगा, जहां से आएगा पैसा देंगे। दैट इज व्हाट इट्स देयर। और जब प्लानिंग कमीशन के साथ काम करते करते मुझे भी एहसास हुआ भारत वास्तव में अभी भी बहुत अमीर देश है। इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंडिया डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट। ये इतना रिच कंट्री है कि यहाँ कोई जब भी आता है, कम पढ़ा लिखा भी गलती से कुर्सी पे बैठता है तो 1000-2000 करोड़ लेके निकल जाता है। सर मधु कोड़ा झारखंड का चीफ मिनिस्टर बना, 20,000 करोड़ का घोटाला। लालू प्रसाद यादव, मैं सर माइक पे बोल रहा हूँ, सॉरी ज्यादा नहीं सर। ये जो प्लीज एक्सक्यूज मी, a very fantastic and important question has been put forward कि budget is silent on rural unemployment. I differ sir, budget is actually focusing on rural side। मेरा टॉक ही मैक्सिमम टाइम एग्रीकल्चर पे रहा है और प्रोसेसिंग पे रहा है। 2017 से आप बजट को देखेंगे सर, 2017 से बजट में आप देखिएगा कि एफपीओ, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, और टॉप, टॉप का मतलब क्या होता है? कोई बजट में जो 2018 में टॉप इंट्रोड्यूस हुआ था, व्हाट वाज टॉप? टॉप इज टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, तीन पे प्रोसेसिंग यूनिट। और उस टॉप को अब चेंज करके 21 के बजट में टोटल कर दिया गया है। टॉप तीन ही वेजिटेबल पे था सर, और अब टोटल कर दिया गया है, विच इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थाउजेंड्स करोड़ रुपीज हैज बीन पम्प। कंडीशन है उसमें कि फार्मर्स पार्टिसिपेशन विल बी देयर। फार्मर के बच्चे को कैसे प्रोसेसिंग में आप डाल रहे हो, तो बेसिकली ट्रेवल कर रहा है। एक और एग्जांपल बताता हूं सर आपको कि 2013 वगैरह या उस समय तक में एक गुड नंबर ऑफ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैड बीन शट डाउन, सिक यूनिट बन गया था, और अब सारे फर्टिलाइजर यूनिट को फिर से रिवाइव कराया जा रहा है। एंड फर्टिलाइजर यूनिट इज अ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हाउ इट इज वर्किंग। उस पर अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर यूनिट प्राइसिंग के टेक्निक से, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, देखिए आपको कैसे होता है। 1,10,000 करोड़ के आसपास का सब्सिडी था, फर्टिलाइजर सब्सिडी इन ईयर 2012, 12-13 के बजट में। जो उसके बाद 14 वाले बजट में आया, 99,000 करोड़ की टेक्निक आई, सॉरी 99,000 करोड़ का सब्सिडी हुआ। उसको घटा के अगले बजट में और कम किया गया, और करते करते 2017 के बजट में 27,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी थी। प्राइमा फेसी सारे डिबेट में ये कहा गया गवर्नमेंट इज एंटी एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग इनटू फर्टिलाइजर, एंड गवर्नमेंट इज चीटिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजर मैंने काफी डीपर एनालिसिस किया। फर्टिलाइजर जो था वो सारा का सारा मार्केट में जाता था, स्पेशली यूरिया वाज द मेन फर्टिलाइजर। और यूरिया जब बाहर जाता था, फैक्ट्री से निकला फार्मर के लिए, फार्मर के रेट पे, और डाइवर्ट हो गया मार्केट की तरफ, और मार्केट में बिक गया, फार्मर्स को नहीं पहुंचा। एक केस। दूसरा केस, फार्मर के पास पहुंचा, फार्मर को सस्ता मिल रहा है तो ज्यादा यूरिया यूज कर रहा था। अब इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने? तीन स्टेप उठाए। ये स्टेप 14-15 में ही उठ गया था, गवर्नमेंट के चार्ज लेते ही न्यू गवर्नमेंट के। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, देयर हैड बीन कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू नीम कोटेड यूरिया। हैव यू हर्ड नीम कोटेड यूरिया? नीम कोटेड यूरिया।
नीम कोटेड यूरिया में जो यूरिया के ग्रैन्यूल्स बनते हैं वो बिल्कुल साबुदाना की तरह बहुत ट्रांसपेरेंट व्हाइट बनता है, उसमें नीम के जूस मिला दिए गए, और जैसे ही नीम का जूस मिला वो सारा का सारा यूरिया रेस्ट ऑफ मार्केट एंड केमिकल प्रोडक्शन के लिए बेकार हो गया। अब वो जाएगा तो सिर्फ ग्राउंड में जाएगा, सॉइल में जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक झटके में मार्केट बंद कर दिया उनका। सेकेंड पॉइंट, मार्केट के यूरिया का प्राइस मार्केट प्राइस पे ले लिया, कस्टमर ग्राहक को, सॉरी ग्राहक मतलब फार्मर को कहा मार्केट प्राइस पे खरीदो, इमीडिएटली हम आपको फंड ट्रांसफर कर देंगे। तो जो बीच की जो एजेंसी थी वो गायब हो गई, बीच की एजेंसी नहीं रही। तीसरा काम किया, 50 kg का यूरिया बैग बनता था उसको 45 kg का बना दिया, 10% रिडक्शन इन यूरिया, और कह दिया कि भाई आप जितना 50 kg यूज करते थे उतना में सिर्फ 45 kg यूज करो। और ध्यान दीजिएगा 2014 और 15 के बजट में, 15 और 16 के बजट में सॉइल टेस्टिंग पे बहुत खर्च हुआ है, और सॉइल टेस्टिंग के लैब्स, चलता फिरता लैब, विलेज का लैब, फ्री सॉइल टेस्टिंग, सारा खर्च गवर्नमेंट बेयर कर रही है, आप सॉइल टेस्ट करवा लो। ये उस समय का खर्च है, ये उस समय के बजट में हाईलाइट था। तो अब आप देख रहे हैं कहाँ कैसे पहुंच रहा है और कैसे बढ़ता चला गया है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी उम्मीद पे यहाँ था कि भाई डबल कर देंगे इनकम एग्रीकल्चर का। इन्होंने पूरी कोशिश भी की, 3 एग्रीकल्चर बिल लाए गए, 3 एग्रीकल्चर बिल, और उस बिल का नतीजा कम से कम दिल्ली वाले तो जरूर जानते हैं। और लास्टली पॉलिटिकल प्रेशर में आके, मेरी आर्टिकल है उस बिल पे, मैंने डिटेल्ड आर्टिकल लिख रखा है, पब्लिक डोमेन में भी होगा। मैंने, दैट इज व्हाट यू नो, मेरा था ये प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, दैट वाज माय आर्टिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, which had been discussed even in the then नीति आयोग। और वो आर्टिकल मैंने हाईलाइट किया कैसे, और मैंने उस रिसर्च पेपर में जो मेरा अपना एग्रीकल्चर वाला है, 1836 से मैंने एग्रीकल्चर को हाईलाइट किया है, 1836 कैसे पूरा का पूरा बढ़ा है। मैंने आर एन मल्होत्रा तक को हाईलाइट किया, कभी चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे बीपी सिंह के पीरियड में, 10,000 करोड़ का लोन माफ किया था, याद होगा, आज तक उसका तो पता नहीं है। 70,000 करोड़ 2007 पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो तो कितना कैसे ट्रैवल किया है पूरा। तो ये जो अब जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बिल वापस करना पड़ा, एक ट्रैप में फंस गया। और ट्रैप का बड़ा क्लियर कट कारण था कि जो अपने आप को एग्रीकल्चर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट बता दूं आपको इंडिया में क्या हो रहा है, ये फार्मर हैं, इन लोगों को एग्जम्प्ट होना चाहिए, और मैं ठहरा अरहती, ध्यान दीजिएगा क्या, मैं इनसे माल खरीदता हूँ, ये बेचारे फार्मर ट्रैक्टर पे, ठेला पे, जिस पे लाने लाएंगे, आड़त में लाएंगे, मैं आराम से एक एसयूवी एक्सयूवी पता नहीं जो जो गाड़ी आपको समझ में आए यूज कर लीजिए, और उतरूंगा। ये कस्टमर हैं लेकिन ये आपस में मिल नहीं सकते हैं, दिस इज व्हाट मंडी पॉलिसी। ये हर हाल में मजबूरन मुझे बेचेंगे, मैं इनको धीरे धीरे जब मर्जी होगा पैसा दूंगा। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके एनुअल रिटर्न फाइलिंग है 1100 करोड़ रुपए, और 1100 करोड़ में इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, नो टैक्सेशन। ये तो टैक्स की बात है, अगर 30% टैक्स लग जाए, 1100 को छोड़ दो, 11 यू नो 1,000 ही रख लो, 30% कितना टैक्स हो जाएगा, 300 करोड़। 300 करोड़ को बचाने के लिए अगर मैं 1-2 करोड़ डोनेट करके हंगामा खड़ा कर दूं तो दिक्कत किस बात की है। आप आओ आराम से, कितना कमाते हो, 500 डेली, मैं 700 तुमको दूंगा, बैठ के रोड पे रख लो। एनीवे दैट इज देयर। सो एग्रीकल्चर रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। सर ये अभी पहली बात है कि इट हैज बीन इन प्रिंसिपल एग्रीड that foreign university like Harvard and some others are expected to come and open the center in India, but that will be better
India is this expenditure which you are talking about, education expenditure which has been made, which is very good one. That is for Indian university, not for foreigner. It is for Indian university, and you must know there has been a digital university, and that digital university and institution of excellence IOE has to be created so that you can also be excellently working. R&D पे भी खर्च है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी हाईलाइट करने की जरूरत है, तो उस पर खर्च है. और कोई क्वेश्चन? अभी आपका क्वेश्चन पहले कोई और किसी का क्वेश्चन, तब उसके बाद आपका क्वेश्चन, बिकॉज योर इज रिपीट राउंड. एनीवन एल्स आल्सो? सब्सिडी को कैसे कम करेंगे वो ऑफ ट्रैक बताएंगे. यस. नहीं सर, आप नहीं सर. 740 schools are there already. Teachers are already there. Additional teacher 38,000 is going to be there. Until unless you have the complete statistics, this comment will be meaningless. So I don't have a right now information ki how many school has got how many teachers. So I can't comment on that part. Yes. Any other question? Yes. Little louder. Oh, that is a question, please. See, GST is what you are trying to make it is one taxation, one nation. So if it is going to be there uniform throughout country, state disparity will not be there. Second, distribution will become fair. Lot of policy handling will become simpler. So these are the certain reasons. So it is not like that यहाँ दिल्ली से सस्ता पेट्रोल मिलता है वाला बोर्ड खत्म हो जाएगा. Attraction to move to that side will also be over, and uniformly it will get distributed. वो तो they have to decide. First they have to agree and then they have to decide. Because item wise they have to make it. Right now, see, do you feel policymaker is restricted only to 28%? They can create a new slab. नहीं तो 28% पे तो आपने अभी तक के आइटम के अकॉर्डिंगली रखा है ना. अगर मैं कहता 28 की जगह 48% या 42% आप एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस कर दोगे तो कौन मना कर रहा है. थोड़ा टीवी पे कमेंट होगा, हंगामा होगा, खत्म हो गई बात. एक नया स्लैब आ जाएगा. कोई रेस्ट्रिक्टेड हो तब तो है. अगर हम आपको डालना हो और वी कांट चेंज द फ्रेम, देन इट इज अ क्वेश्चन. आप तो फ्रेम ही बदल सकते हैं, तो फिर कैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि फिट कैसे करेगा. जो फिट करेगा उसका फ्रेम बना देंगे. Okay. This is, see, your question is little out of budget context, because that answer is available to me, but it will be total digressions how the, this is called federal resource allocation mechanism, how center state resource allocation works. That formula depends on number of factors, not only one factor. So this is actually handled by Finance Commission, and Mr. Singh, KN Singh, is actually taking care of this time to how these allocations should be there, and it is a very fairly, and more allocation has been there to a state. Okay, net to tax credit is also visible here, so that allocation is very much to the state is there. No state can complain. हाँ, ये complain जरूर आता है मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए, वो सबके लिए होगा. जी. इंटरेस्ट बिग अमाउंट जो है सर, रेपो रेट का रिलेशनशिप दो जगह से. एक जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट में है, ये इंटरेस्ट बर्डन बड़ा अमाउंट हमने दिखाया था आपको, जो गवर्नमेंट को पे करना है. आप रेट पे चले गए, तो रेट जो है ना
होता क्या है कि देयर इज अ फंड फ्लो, दैट इज कॉल्ड कैरी ट्रेड। फंड फ्लो में क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फंड आता है, और जो इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। एक इंटरेस्ट को कहते हैं रियल इंटरेस्ट, एक को कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट। जैसे ही रियल इंटरेस्ट रेट जितने भी आपकी कंट्री हैं सबके लिए बराबर होना चाहिए, बराबर रियल इंटरेस्ट रेट। जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, जहां से फंड मूवमेंट होता है। अगर वो रियल इंटरेस्ट रेट आपका कम होने लगेगा, तो रियल इंटरेस्ट रेट कम कब होता है, तो रियल इंटरेस्ट रेट का थंब रूल फिशर इक्वेशन है, जो बेसिक इकोनॉमिक्स में है और आपके सिलेबस में भी है, आगे आएगा। फिशर इक्वेशन में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट, राइट। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट आप देखते हैं, अगर बैंक कहती है कि 8% इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब वो नॉमिनल इंटरेस्ट है। रियल इंटरेस्ट रेट कहीं लिखा नहीं होता, रियल इंटरेस्ट रेट कहीं बोला नहीं जाता है। रियल इंटरेस्ट रेट ऑलवेज डिड्यूस किया जाता है, ऑलवेज फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8% अगर आपके पास नॉमिनल इंटरेस्ट है माइनस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे नॉमिनल में, तो अगर 8 है, अगर इन्फ्लेशन 6% माइनस कर दिया, 2% आपका रियल बना। अब अगर आपका इन्फ्लेशन सपोज कीजिए 2% और नियर टू 2% इज द रियल इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट ग्लोब, 2% के आसपास है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, 8% का आपका रेट है और इन्फ्लेशन बढ़ के 7% हो गया है, 8% हो गया। अगर 8% इन्फ्लेशन होगा तो 8 माइनस 8, तो आपका रियल रेट क्या निकला, जीरो। तो जीरो रियल रेट मतलब आप रियल रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। And when you are not giving real return and I'm the investor, why I'll be investing to you? I will be taking money somewhere else. इसीलिए आप सुनते होंगे अभी जो रेपो रेट बढ़ा है, तो फेडरल रिजर्व बढ़ाया नहीं, इधर आप रेपो रेट बढ़ा दिया। क्योंकि फेडरल रिजर्व का अगर रेट बढ़ा, मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूं, तो मुझे यूएसए अच्छा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। आई विल टेक माई फंड, इवन बीइंग एन इंडियन, आई कैन टेक माई फंड टू यूएसए वेयर माई रिटर्न विल बी बेटर एंड इंडिया विल नॉट बी गिविंग मी रिटर्न। तो आपको काउंटर बैलेंस करना पड़ता है, दैट्स वन एस्पेक्ट। डोमेस्टिक एस्पेक्ट में भी है कि अगर रेट ज्यादा हो जाएगा, देन इन दैट केस आप रेट ज्यादा होने के बाद आप खर्च करने की जगह डिपॉजिट करना शुरू कर देना। तो खर्च करने से ही आप डिमांड करते हैं, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। दैट इज द रीजन। यस, एक बजट इज मेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, इकोनॉमिक सर्वे इज अ काइंड ऑफ लेखा जोखा ऑफ द पास्ट ईयर। तो इसको जो जितना अनाउंस किए हैं, उसको अगर देखना है आगे, तो अगला जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, एक, तो इकोनॉमिक सर्वे को देखिए कि क्या जो आप इतना बोले थे वो किए भी हो या ऐसे ही टाइम पार कर दिए। तो उसको देखने के लिए क्या करें, अभी इकोनॉमिक सर्वे जो 31 जनवरी को प्रेजेंट हुआ, उस इकोनॉमिक सर्वे को निकालिए और लास्ट जो बजट था उसको मिलाइए और देखिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। ऐसे कुछ ग्राफ इसमें से इकोनॉमिक सर्वे में से थे। कौन सा, तो मैं तो आपको कई जगह डेटा दिखाया, ग्रोथ रेट आपको दिखा दिया, पूरे ईयर बाई ईयर कैसे चेंज किया है वो दिखा दिया। दैट इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, यही तो बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे से मैंने लिया। सारी ग्राफ बजट से नहीं था। ओवरऑल इट हैज बीन अ फैंटास्टिक मूवमेंट। Percentage is very tough to speak on every front, but certainly if you ask me, it is a pass in first division. So I hope, yes, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। नहीं, इससे क्या फर्क क्या पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आप ये आपकी थ्योरी यहाँ से शुरू होती है कि प्राइवेट इज मोर ऑनेस्ट देन गवर्नमेंट। नहीं, यू नो इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। एंड दूसरी बात है, मैं अगर गवर्नमेंट बन के आपके पास आऊं तो आपका इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, प्राइवेट को आप इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करोगे अपना। मैं मिसयूज करूंगा आपके इंफॉर्मेशन को, तब क्या करोगे। तो इंफॉर्मेशन ही क्यों कोई देगा उसको प्राइवेट को, ठीक है। एक, हाँ क्या पूछ रहे हैं। अब विंडो ड्रेसिंग नहीं कहना चाहिए इसको।
अगर फोरकास्ट है तो इसमें विंडो ड्रेस कैसे होगा? तो आप एक ही बार कर पाओगे ना, उसके बाद तो वो आपका फिर डाउन हो जाएगा। आप इस बार बोल दोगे लेकिन ये तो 365 दिन तो 365 कैलेंडर बदलने के साथ हो जाएगा, तो फिर क्या बोलोगे आप? तो इसलिए तो इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अपने पेरेंट को कहता है कि मैं इस बार 90% मार्क्स लाऊंगा, तो क्या वो विंडो ड्रेस करके बोल रहा है? लाने वक्त एक्चुअल रिजल्ट में उसका 75% मार्क्स आया, लेकिन जिसने बोला था उसमें उसको 55% मार्क्स आया था। 55 के वक्त प्रॉमिस किया 90% आया 75%, हाउ यू लुक इट? आप भी बोलोगे अपने घर में कि क्या मार्क्स आने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर आने वाला एग्जाम, राइट? तो क्या बोलोगे आप कि इज इट विंडो ड्रेस? नो, इट इज नॉट अ राइट वर्ड, इट इज एस्टिमेशन, एम्बिशन। एम्बिशन वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट्स रॉन्ग इन टू बीइंग एम्बिशियस? टेल मी। अगर मैं एम्बिशन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं 100% लाने के लिए काम कर रहा हूँ, बाद में 90% पे 80% पे रुक गया, गलत क्या है इसमें? अगर गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा या 2030 में 10 ट्रिलियन बना दूंगा, अगर इस मिशन के साथ गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इसमें हमारा एज ए सिटीजन होता है, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। जीडीपी में हम आप भी तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, राइट? तो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर, इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, डाउन करते हैं। नो, वी हैव टू कंट्रीब्यूट। So I hope this is enough, and questions has been also through. So uh, no question anymore is a signal that my job is complete. Thank you. Thanks a lot to you. Okay. Bye. सर, मुझे इंटरनल्स के बारे में पूछना था, लाइक कब से होंगे? आप किस प्रोग्राम? एमबी। MBA में? मार्च। अच्छा, फरवरी में कह रहे थे कोई होंगे तो